Good evening everyone. Video number 4. These are all selected and expected questions. You will get 100% marks if you do all these questions. Now question number 1. A boy standing on the ground finds a bird flying at a distance of 100 meters from him at an elevation of 30 degree. A boy is standing on the ground, finds a bird flying at a distance of 100 मीटर फ्रॉम हिम. दिस ए बॉय, दिस ए बर्ड. इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है. एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग finds the angle of elevation of the same bird to be 45 degree. The boy and girl are on the opposite side of the bird. ये bird की opposite side, ये है boy और इधर है girl. But girl कहाँ है? 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर. At the roof of the 20 मीटर हाई बिल्डिंग. This is 20 मीटर. The boy and girl are on the opposite side of the bird. Find the distance of the bird from the girl. गर्ल से और बर्ड से ये डिस्टेंस फाइंड करना है हमने. लेट इट बी एक्स. ये बनेगी, इसको ज्वाइन करो. दिस एंगल इज गिवन. ए गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड टू बी 45 डिग्री. द बॉय एंड गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बर्ड. Find the distance of the bird from the girl. Let it be x. A, B, C, D, E, F. The nearest meter. Okay. You first in triangle ADE. In triangle ADE. इन राइट ट्रायंगल ADE. दूसरा ट्रायंगल लेंगे हम इन राइट ट्रायंगल ABF. इन राइट ट्रायंगल ABF हमें एक्स फाइंड करना है. अगर हमें AF मिल जाए तो ये हम एक्स फाइंड कर सकते हैं. AF के लिए ये ट्रायंगल लो, इसमें AD फाइंड कर लो. इन राइट ट्रायंगल ADE, राइट AD अपॉन 100. This is perpendicular, this is hypotenuse, P upon H. This is equal to sine 30 degree, which is equal to 1 upon 2. AD upon 100. AD is equal to 1 upon 2 into 100. AD is equal to 50 meter. We get AD is equal to 50 meter. Now this is 20. This will also be 20. AD is 50. You can find AF. AF is equal to 50 minus 20, which is equal to 30 meter. So you can write here 30 meter. Okay. Now in right angle ABF, x upon 30 या 30 upon x. 30 upon x is sine. 30 upon x is equal to sine 45 degree, which is equal to 1 upon root 2. Cross multiply x is equal to 30 root 2. root 2 की वैल्यू होती है 1.414. 1.414. which is equal to 3 for the 12, 3 1 the 3 plus 1 4, 3 for the 12, 3 1 the 3 plus 1 4. 42.42. The question was find the correct to the nearest meter. Nearest meter mean decimal part छोड़ दो. Decimal छोड़ दो. Nearest meter. This is 42 meter. This is the answer.
The question number 2. From the top of a cliff 100-meter high, from the top of a cliff 100-meter high, the angle of depression of two boats are 37 degree and 70 degree respectively. Find the distance between the boats if the boats are on the same side of the cliff. If the boats are on the same side of the cliff. The angle of depressions are 37 degree and 70 degree. This is 37 degree and this is 70 degree. Now this angle is 70 degree and this is 37 degree. Angle of elevation is equal to angle of depression. Name it A, B, C, D. Find the distance between the two boats. These are two boats, D and C. In right triangle ABC, in right triangle ABD. Though these are not the standard angles, 37 and 70 degree. तो स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं? 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. अगर ऐसी पोजीशन होती है कि स्टैंडर्ड एंगल नहीं है तो आपने ये x ले लो, ये y ले लो. We have to find x. We have to find x. Distance between the two boats. Okay. Now these are not standard angle. इसमें क्या करना है आपने? ABC के अंदर जो वेरिएबल है वो अपने न्यूमरेटर में लेना है. To solve the value of y in easy way, y upon 100 is equal to cot. बट मैथमेटिक्स टेबल में आपको कॉट की वैल्यू नहीं मिलेगी. यू चेंज इनटू tan. दिस इज इक्वल टू tan 20 डिग्री. tan एंड कॉट दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. तो जो कॉट 70 की वैल्यू होगी वो tan 20 की वैल्यू होगी. तो tan में चेंज कर दो, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी. तो tan 20 डिग्री की वैल्यू यहाँ से ले लो. आप मैथमेटिक्स टेबल में ले लेना, मैंने यहाँ लिखी है 0.3640. 0.3640 y upon 100. y is equal to 100 into 0.3640 which is equal to 36.40. This is the value of y. हमें चाहिए x. In right triangle ABD, यहाँ भी वेरिएबल ऊपर लो, x plus y upon 100 is equal to cot 37 degree which is equal to tan 53 degree. तो tan 53 डिग्री की वैल्यू 1.3270 1.3270. x plus y equal to 100 into 1.3270 which is equal to 132.70. Now put the value y. Put y is equal to 36.40. x plus 36.40 is equal to 132.70. x is equal to 132.70 minus 36.40. 96.30, or you can say 96.3 meter. 96.30 or 96.3. Okay.
Now next part, if the boards are on the opposite side, if the boards are on the opposite side, second part. तो second part में जो फिगर बनेगा that is 100 meter. The two boards are on the opposite side. The angle of depression are 37 degree and 70 degree. Mark it A, B, C, D. This is X, Y. Angle of elevation is equal to angle of depression. Now take two triangles in right triangle ABC, in right triangle ACD. Again X numerator में X upon 100 is equal to cot 37 degree, which is equal to tan 53 degree, which is equal to 1.3270. 1.3270 x upon 100. X is equal to 100 into this, we get 132.70. Now ACD triangle में y upon 100 is equal to cot 70 degree, which is equal to tan 20 degree. Which is equal to tan 20 degree. Now tan 20 degree is 0.3640. 0.3640. Now y is equal to 100 into this, we get 36.40. हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू बोर्ड्स. बी डी फाइंड करना है. ये दो बोर्ड्स हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है. वी हैव टू फाइंड बी डी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, विच इज इक्वल टू 132.70 प्लस 36.40, विच इज इक्वल टू 0, 7 plus 4 11, 1, 1 plus 6 7 plus 2 9, 3 plus 3 6, 1, 169 point. Okay, this is the answer. This is BD meter. This is the answer. Now these were two parts. When the boards are on the same side and when the boards are on the opposite side, there are two parts. There are two questions. Only one question will be asked in the exam. दोनों नहीं आएंगे आपको, दोनों में से एक ही पूछा जाएगा आपको, क्योंकि दोनों दो क्वेश्चन बनते हैं. ये हमने एक ही क्वेश्चन में दो पार्ट्स कर दिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम टॉप ऑफ द क्लिफ 92 मीटर हाई, the angle of depression of the buoy is 20 degree. The angle of depression of the buoy is 20 degree. Calculate to the nearest meter. Nearest meter में आंसर देना है, डेसिमल नहीं रखना हमने. The distance of the buoy from the foot of the cliff. The distance of the buoy from the foot of the cliff. ये हमने फाइंड करना है. X. A, B, C मार्क कर लो. This angle is depression, this is elevation, this same होते हैं ये 20 degree. In right triangle A, B, C, x upon 92, which is equal to cot 20 degree, which is equal to tan 70 degree. Tan 70 degree is 2.7475 x upon 92. Now x is equal to 92 into this. X is equal to 2.7475
75 इंटू 92, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2.7475 इंटू 92 विच इज़ इक्वल टू 190 नो 2.7475 इंटू 92 252.252.77. Now to the nearest meter which is equal to 253. ये 5 से बड़ा नंबर है, 1 ऐड कर दो. This is a meter. Now this is the answer. Question number 4. The shadow of a vertical tower figure is given. The shadow of a vertical tower AB on the level ground is increased by 10 meter. ये shadow है 10 meter increase हो रहा है. The vertical tower AB on the ground, the shadow on the ground is increased by 10 meter when the altitude of the sun changes from 45 to 30 degree. पहले 45 था, changes to 30 degree. जो एंगल बड़ा होता है वो 90 के पास होता है, जो छोटा होता है दूर होता है. तो ये ध्यान से करना कि जब 45 पहले था, जब 30 बना तो 10 मीटर इंक्रीज हो गया शेडो. एज शोन इन द फिगर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड गिव योर आंसर करेक्ट टू 1/10 ऑफ द मीटर. 1/10 मीन 0.1, यानी कि 1 डेसिमल तक आंसर करना आपने. इसको एक्स ले लो, इसको एच ले लो, दो ट्रायंगल बन जाएंगे. इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट ट्रायंगल ए बी डी. ए बी सी में लिख लो h/x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1. h इज इक्वल टू x. इन ए बी डी ट्रायंगल में h/10 प्लस x इज इक्वल टू tan 30 डिग्री. This is tan 30 degree which is equal to 1/√3 h/10 plus x. We have to find height h. तो ऐसे करो, x की वैल्यू डाल दो h. Put x is equal to h. हमारा क्वेश्चन टोटली h में आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ h. क्रॉस मल्टीप्लाई. क्रॉस मल्टीप्लाई h√3 इज इक्वल टू 10 प्लस h. h√3 माइनस h इज इक्वल टू 10. h कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 10. नाउ h इज इक्वल टू 10 अपॉन √3 माइनस 1. इसको रैशनलाइज कर दो. √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, 10 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. वी गेट 10 √3 प्लस 1 अपॉन 3 का √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2, 2 कैंसिल विद 5. विच इज इक्वल टू 5. √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, 2.732. 5 to the 10, 5 to the 15 plus 1, 16, 5 7 the 35 plus 1, 36, 5 to 10 plus 3,
13, 1 डेसिमल प्लेस तक आंसर करना है हमने. इट मीन्स दिस विल बिकम 7. दिस इज मीटर. वी आर टू फाइंड h. दिस इज h. नाउ दिस इज आंसर. नो दिस इज द आंसर आपका. Okay. Now question number 5. From the top of a hill, the angle of depression of two consecutive kilometer stone. Consecutive kilometer stone जो हाईवे पे स्टोन्स होते हैं तो उसमें एक एक किलोमीटर का डिस्टेंस होता है. तो कंजक्टिव किलो मीन एक स्टोन के बाद नेक्स्ट स्टोन. तो दो स्टोन जो है कंजक्टिव किलोमीटर मीन उनके बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. From the top of the hill, the angle of depression of two consecutive kilometer stone due east. ये दो स्टोन लिख लो. Depression, angle of depression of two consecutive kilometer stone due east are found to be 30 degree and 45 degree. This is 30 degree and this is 45 degree. Now this becomes 45 degree, sorry, this is 90. This angle of elevation is equal to angle of depression. जो 90 के पास होता है वो बड़ा होता है, 90 के दूर होता है वो छोटा होता है. This is 30. This is 30 degree. Now A, B, C, D. These are two stones. Consecutive kilometer mean 1 kilometer. इसको x ले लो, इसको h ले लो. Find the distance of two stones from the foot of the hill. Find the distance of two stones from the foot of the hill. We have to find BC and BD. D का भी डिस्टेंस बेस से और C का भी डिस्टेंस बेस से. BC and BD. We have to find BC and BD. BC is x and BD will be 1 ऐड कर देंगे उस पर. In a right angle ABC, in right angle ABD, एक ABC ले लेंगे और एक ABD ले लेंगे. H upon X is equal to tan 45 degree which is equal to 1. H is equal to X. ABD H upon X plus 1 is equal to tan 30 degree which is equal to 1 upon root 3. Now we have to find x distance CB and BD. तो it means अगर हम h की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें x के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा x में. Put h is equal to x. We get x upon x plus 1 is equal to 1 upon root 3. Cross multiply. X root 3 is equal to x plus 1. X root 3 minus x is equal to 1. X common. Root 3 minus 1 is equal to 1. X is equal to 1 upon root 3 minus 1. Rationalize it. Root 3 plus 1. Root 3 plus 1. We get root 3 plus 1 upon a square minus b square. That we will get 2. Root 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, root 3 का स्क्वायर 3, 1 is 1, 2. We get 2. 1.732 plus 1 upon 2 which is equal to 2.732 upon 2. 2 1 there, 2 3 6, 2 6 there, 2 6 there. We get 1.37 kilometer. This is x. हमें फाइंड करना है, एक हमें BC फाइंड करना है और एक BD फाइंड करना है. तो BC हमारा आ गया, BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1.37 किलोमीटर.
1.37 किलोमीटर एंड बी डी इक्वल टू 1 ऐड कर दो 2.37 किलोमीटर. दिस इज आंसर. वी वर टू फाइंड करना था हमने. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल. फाइंड द डिस्टेंस 2 स्टोन्स फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल. एक स्टोन ये फ्रॉम द फुट ऑफ हिल मीन x, एक ये फुट ऑफ हिल इट मीन x+1, उसमें 1 ऐड कर देंगे. These were the 2 answers, BC and BD. Now question number 6. From 2 points A and B on the same side of the building. A and B are 2 points on the same side of the building. The angle of elevation of the top of the building are 30 degree and 60 degree. The angles of elevation 30 डिग्री एंड 60 डिग्री. 90 के पास जो एंगल होगा वो बड़ा होगा, जो दूर होगा वो छोटा होगा. इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 10 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. डिस्टेंस बिटवीन, फिगर गलत बन गई है. Now from the 2 points A and B, नीचे given है A and B 2 points. The angle of elevation of the top of the building is 30 degree and 60 degree. The points are given A and B. इसको C लिख लो, इसको D लिख लेते हैं. The angle of elevation 60 and 30. 60 एंगल 90 के पास, जो दूर एंगल वो छोटा एंगल. If the height of the building is 10 meter, find the distance between A and B correct to 2 decimal place. Find the distance between A and B. इसको x ले लो, इसको y लिख लो. नो 2 ट्रायंगल बन गए आपके. In right triangle ABC, in right triangle ACD. In right angle एक बनेगा ACD, एक बनेगा BCD. Now BCD में 10/y is equal to tan 60 degree, which is equal to √3. Y √3 is equal to 10. In right triangle ACD 10/x plus y is equal to tan 30, which is equal to 1/√3. 10/x plus y. X plus y is equal to 10√3. We have to find distance between A and B. We have to find x. तो इसमें y की वैल्यू निकाल लो. y is equal to 10√3 minus x. यहाँ पुट कर दो. Put y is equal to 10√3 minus x. We get 10√3 minus x into √3 is equal to 10. हमें x फाइंड करना है. वहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो. हमारा क्वेश्चन आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x. We will get 30, 10√3 into √3 30 minus x √3 is equal to 10. 30 minus 10 is equal to x √3. 20 is equal to x √3, or you can say x √3 is equal to 20. Now x is equal to 20 upon √3.
इसको रैशनलाइज कर दो, 20√3 x इज इक्वल टू √3 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3 we get 20√3 upon 3 which is equal to 20 into 1.732 upon 3. Now this is equal to 0, 2 to the 4, 2 to the 6, 2 to the 14, 2 on the 2 plus 1, 3, 34.640 upon 3, 3 1 the 3 1 the 3 5 the 15, 14, 3 4 the 12, 20. Now round up कर दो इसको, we get 11.55 meter. This is x. Distance between A and B, 2 points. Distance between 2 points A and B. This is x. This is the answer. Question number 7. As observed from the top of the 80-meter tall lighthouse, the angle of depression of two ships on the same side of the lighthouse. दो ships हैं ये on the same side of the lighthouse. The angle of depression, तो ये लाइन बनेगी ऊपर, this angle and this angle. Angles are 30 degree and 40 degree. ये 30 degree है और ये 40 degree. तो this will become 30, this is 40, this is 90, A, B, C, D. Find the distance between two ships. If it is x, this is y. Where to find x? Distance between the two ships. Given your answer, give your answer. Give your answer correct to the nearest meter. Nearest meter में आंसर करना है. Okay. In right triangle A B C और सेकंड बनेगी A B D. In right triangle A B C. In right triangle A B D. A B C में लिखो 80/y. ये स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, 30, 45, 60 नहीं है, तो इस पर y को ऊपर ले लो टू मेक द कैलकुलेशन ईजी. y/80 इज इक्वल टू cot 40 degree which is equal to tan 50 degree and tan 50 is equal to 1.1918. y/80, y is equal to 80 into 1.1918 which is equal to 8 8 the 64, 8 1 the 8 plus 6 14, 8 9 the 72 plus 1 73, 8 1 the 8 plus 7 15, 8 1 8 plus 1 9, डेसिमल 4 के बाद. दिस इज वैल्यू ऑफ y 95.344. Where to find the value of x, distance between the two ships? हमें x फाइंड करना है. Now in this triangle ABD, 80 upon x plus y is equal to tan 30. 80 upon x plus y is equal to tan 30 degree which is equal to 1/√3. 80 upon x plus y, cross multiply x plus y is equal to 80√3. Now put the value of y. इसको सॉल्व कर लो. 80 into 1.732. This is equal to 0, 8 to the 16, 8 3 24 plus 1 25, 8 56 plus 2 58, 8 1 8 plus 5 13. डेसिमल 3 के बाद 138.56. This is x plus y. Put
y is equal to 95.344. We get x plus 95.344 is equal to 138.560. X is equal to 138.560 minus 95.344. 138.560 minus 95.344, 43.216. X is equal to 43.216. Nearest meter. So the answer is 43 meter. Nearest meter. This is the answer. Now next question. An aeroplane of an altitude 250 meter observes the angle of depression of two boats are on the opposite side. एक इधर बना लो, एक इधर बना लो. The angle of depression, ये ऊपर लाइन बनेगी. These are angle of depressions are 45 degree and 60 degree. एक 45, दूसरा 60 degree. Now this is 45 degree, this is 60 degree. A, B, C, D. Find the width of the river. This is a river BD. हमें फाइंड करना है BD इज इक्वल टू x प्लस वाई. अगर ये x ले लो, ये y ले लो, हमें फाइंड करना है BD. An aeroplane of an altitude of 250 meter observes the angle of depression of two boats are on the opposite side of a river. 45. The angles are 45 degree and 60 degree. Find the width of the river. Write the answer correct to the nearest whole number. Now we have to find x and y. उसको ऐड कर देंगे तो we will get the width of the river. In right triangle ABC, in right triangle ACD, इसमें लिख लो 250 अपॉन x is equal to tan 45 degree, which is equal to 1. 250 upon x. X is equal to 250. Now in triangle ACD, 250 upon y is equal to tan 60, which is equal to root 3. 250 upon y. Y is equal to y root 3 cross multiply is equal to 250. Y is equal to 250 upon root 3. इसको कर दो rationalize, which is equal to 250 root 3 upon 3. इसको सॉल्व करेंगे. This is equal to 250 into 1.732 upon 3, which is equal to 0. 25 into the 50, 25 3 is 75 plus 5, 80, 25 7 the 175 plus 8 183, 18, 25 1 the plus 18, 43, decimal 3 के बाद, which is equal to 433. This is y. Find करना है width of the river BD. BD is equal to x plus y, which is equal to 250 plus 433. 433.
The question, the answer is 394 upon 3. Okay. This was upon 3, which is equal 3 1 the 3 4 the 12, 3 4 the 12, 1 10, 3 3 the 3 3 the. Now BD is equal to 250 plus 144.33, which is equal to 33,493,94. Nearest whole number 394 meter. 394 meter. Equal to 394 meter. This is the answer. Nearest. It was the answer, nearest whole number. Okay. Decimal छोड़ दो. Nearest whole number is the answer. An aeroplane at an altitude of 1500 meter. An aeroplane at a height of, altitude mean height, 1500 meter. Find that two ships are sailing towards it in the same direction. In the same direction. Two ships are sailing towards it in the same direction. Towards it. The angle of depression as observed from the aeroplane are 45 degree and 30 degree. Angle of depression are 45 degree and 30 degree. ये 30 degree, ये 45 degree. Now this is 45 and this is 30 degree. Angle of elevation is equal to angle of depression. Or you can say alternate angles. और जो ऐसे भी कर सकते हो, 90 के पास बड़ा एंगल, 90 से दूर छोटा एंगल, और छोटी आर्क छोटा एंगल, बड़ी आर्क बड़ा एंगल. ओके. नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स. ये फाइंड करना हमने. दिस डिस्टेंस. सपोज इज एक्स, दिस इज वाई. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. इन राइट ट्रायंगल दो ट्रायंगल ले लेंगे. In right angle ABC, in right triangle ABC, दूसरा ट्रायंगल बनेगा ABD. In right triangle ABD, 1500 upon X. 1500 upon X is equal to 1500 upon Y. Is equal to 1045, which is equal to 1. 1500 upon Y is equal to 1. Y is equal to 1500. Now in triangle ABD, 1500 upon X plus Y. 1500 upon X plus Y is equal to 1030 degree, which is equal to 1 upon root 3. 1500 upon X plus Y, cross multiply X plus Y is equal to 1500 root 3. इसको सॉल्व कर लो. विच इज इक्वल टू 4500. दिस वाज 1500, नॉट 4500.
this was 1500 and this will be 1500 root 3. Now put y is equal to 1500, we get x plus y mean 1500 is equal to 1500 root 3. X is equal to 1500 root 3 minus 1500. You can put the value of root 3 here, or you can take 1500 common. 1500 into 1.732 minus 1, which is equal to 1500 0.732 15 से करो मल्टीप्लाई, 15 टू द 33, 15 थ्री द 45 प्लस 3 48, 15 7 105 प्लस 4 109 डेसिमल 3 के बाद 1098. This is x meter. This is answer. This is the distance between the two ships. Here there are two ships. These were the aeroplane at an altitude of 1500 meter finds that two ships, these are two ships, the distance between two ships find करना था हमने, we get x. Okay, so this is the answer. Question number 10, last question of this video, number 4. An aircraft is flying at a constant height with a speed of 360 km per hour. Speed is given 360 km per hour. From a point on the ground, the angle of elevation of an aircraft at an instant. First time जब देखा उसने, the angle observed to be 45 degree. From a point on the ground, the angle of elevation of the aircraft at an instant was observed to be 45 degree. After 20 seconds, the angle of elevation was observed to be 30 degree. Now the angle of elevation is 30 degree. Determine the height at which the aircraft is flying. ये height find करनी है हमने. Root 3 is equal to 1.732 is given. Now this is A, B, C, D, E. ये है 20 second. Time is given. Speed is given. We can find this distance AB. Suppose this is X, this is Y, this is also Y. Speed के यूनिट चेंज करो, मीटर पर सेकंड में कर लो. 360 इंटू 5.18 ये बन जाएंगे मीटर पर सेकंड. जब हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इंटू 5.18, अगर किलोमीटर पर आवर में करना है तो इंटू 18.5. 18 20 द 20 इंटू 5 100 मीटर. ये आपका आ गया स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड. तो डिस्टेंस फाइंड कर लो. डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. स्पीड है 100,
टाइम है 2000 मीटर। हमने ये डिस्टेंस फाइंड कर लिया 2000 मीटर। अब इसको 2000 लिख लो। नो इंस्टेड ऑफ y विल यूज 2000। इन राइट ट्रायंगल BCE ADE, ये ले लो ADE। इन राइट ट्रायंगल BCE ADE में जो हाइट है ये h है, तो ये भी h अपॉन x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1, h इज इक्वल टू x। Now in triangle BCE, h upon x plus y, y mean 2000 is equal to tan 30 degree which is equal to 1 upon root 3, x plus 2000 is equal to h root 3। हमें फाइंड करना है हाइट। हाइट फाइंड करना है तो x की वैल्यू डाल दो h, पुट x इक्वल टू h। हमारा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ h आ जाएगा। 2000 इज इक्वल टू h रूट 3 माइनस h कॉमन रूट 3 माइनस 1, h इंटू रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 2000। h इज इक्वल टू 2000 अपॉन रूट 3 माइनस 1। इसको कर दो रैशनलाइज। नाउ दिस इज 2000 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर 3 माइनस 1 स्क्वायर 1, 3 माइनस 1 2 विच इज इक्वल टू 1000 इंटू 1.732 प्लस 1, 1000 into 2.732 which is equal to 2732 meter. This is h 2732. Okay, right. Now this was question number 10. Now these are 10 questions in video number 4. Please share the video as much as possible so that other students can be benefited. Thanks.